Assalamu alaikum, my dear students, and this is Zishan Sattar, and I'm here again with you people for the prediction of IELTS exams in the late half of September and in October as well. मैं थोड़ा लेट हूँ इस दफा 5-7 days लेट हूँ फॉर प्रिडिक्टिंग द एग्जाम्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर. बेसिक रीजन अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे ही अपने बच्चे हैं. दे ऑल वर अपीयरिंग इन एग्जाम. इंशाल्लाह ताला दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम. एंड फ्रॉम माय साइड जी, सितंबर लास्ट 10 days and the whole month of October, I'm very clear about this thing that इंशाल्लाह ताला आपका नंबर 1 IELTS राइटिंग एग्जाम. IELTS राइटिंग एग्जाम में essay, advantages, disadvantages and the opinion essay, one out of them will be in exam and I'm very sure about it. जो आपका essay advantage disadvantage पे आएगा, this will not be a simple essay, this will be a relatively strong variable. For an example, अगर एक थिंग 1 कर लें और 2 कर लें तो दोनों के करने में क्या फायदा और क्या नुकसान. अगर सब comparative advantage disadvantage essay, I foresee that examiner is working on in month of late September and in October as well. Number 1 and number 2, IELTS summary exam. This will be a comparative picture. Again, ये भी comparative picture होगी और comparative picture में examiner is in love with 2 things: pie chart and number 2, the line graphs. So line and the pies are very attractive questions for IELTS writing exam task 1 summary question. And इसके बाद अगर कोई second choice है तो that will be somewhat somehow examiner is going very close. मैं समझता हूँ उसका दिमाग जा रहा है and that is towards the process diagram, but that will be only 20% option. So आपको 2 सवाल तैयार करने हैं, primarily line charts and number 2 the pie charts. Number 2 means exam number 2. Second exam is the reading exam. Last time जब मैंने predict किया था तो लोग कहते थे जीशान ने बड़ा narrow guess किया. अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज्जत भी दी. Again, I'm not giving you the variety of 14 questions in September and October. बड़ा clear हूँ और मैं बड़ी openly ये बात कर रहा हूँ आपसे. 15 to 17 will be the fill in the blanks. खाए वो fill in the blanks simple question हो, fill in the blanks summary हो, fill in the blanks box question हो या sentence completion. 4 fill in the blanks 15 से 17 सवाल देंगे जी. yes no and g will be around 10 to 12. so 10 से 12 yes no and g, about 15 to 17 fill in the blanks. 5 to 6 will be here inshallah taala. heading the paragraph, list of headings. 1 से 2 MCQs and 3 to 4 matching questions. So what you have to focus all around in exam: fill in the blanks number 1, number 2 yes no and questions, number 3 heading the paragraph, number 4 matching and number 5 MCQs. बिल्कुल 2 से 3 questions and आपके matching questions again 3 से 4 questions. heading the paragraph आपके 5 से 6 questions and rest whole paper will be about 25 questions, will be 25-27 questions will be from fill in the blanks and yes no and NJ. Number 3, third exam is your listening exam. The first section will be a form filling as usual. There will be no difficulty. First 3 sections would be absolutely wonderful, as normal as they can be, no hardships. Section 4, complete 1 topic summary. Alert रहिएगा. मैं समझता हूँ कि almost 10 questions of MCQs will be there in the month of September and October in your listening exam, when you will be appearing either for GT, either for academics, either for computer or the manual exams. 10 के करीब MCQs आएंगे. अलर्ट रहिएगा listening MCQs से. and maps 3 से 4 नंबर का वो हर एग्जाम में ट्रायल कर रहा है और लगातार वही चलाएगा, लेकिन MCQ से अलर्ट रहिएगा जी. Stay and get into practice for the listening MCQs, because about 10 you should expect an exam. Repeat करता हूँ. Section 1 as usual form filling. Section 2, section 3 will contain 10 MCQs in total along with the mix of questions with the map as well, and section 4 will be 1 single topic summary of the 10 questions. This will be the pattern of IELTS listening exam inshallah. Regarding speaking, pehla question about the name. Second question, the lengthy question that need your answer, is about your study or the work.
अपने वर्क और स्टडी से रेलेवेंट 3-3 4-4 सवाल तैयार कर लीजिएगा। फेवरेट एरिया, फेवरेट टॉपिक, व्हाई डूइंग जॉब, फेवरेट सब्जेक्ट, experience in the last qualification, institution name. So these are the very common questions examiner love to ask. इसके अलावा if you go for the cue cards, आजकल बड़े hot topics हैं technology, number 2 the applications, changes in the technological atmosphere around the world, the applications being used by you, hometown, visit to village, and one more thing, your experience in your school time. These are the hot 5, 6, 7 topics. Examiner is going very close to these all. Best of luck for all of the examinees who are appearing in September last week and the whole month of October exams. मेरी बहुत सी दुआएं आप सब लोगों के लिए हैं, मेरे अपने बच्चे और आप सभी मेरे बच्चे हैं, सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं। और जो मैंने बात की है स्ट्रिक्ट टू इट, इंशाल्लाह ताला एग्जामिनर विल नॉट गो आउट ऑफ दिस बैटल इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।